Do you know how old is the Aurangabad cave? The cave, temple of Aurangabad carved between 6th and the 8th century, are 9 kilometers from the Aurangabad city center, a few kilometers from the campus of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University and Soniri Mahal, and also just nearby Bibi Ka Maqbara. औरंगाबाद गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी का एक उत्कृष्ट नमूना मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। ये गुफाएं अजंता नामक गांव से समीप ही स्थित में है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता गुफाएं के करीब है। औरंगाबाद caves are the 12 rock-cut Buddhist shrines located on a hill running roughly east to west close to the city of Aurangabad, Maharashtra. The first reference to the Aurangabad cave is the great Chaitya Canary cave. The Aurangabad caves were dug out comparatively soft basalt rock during the 6th and 7th century. महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में सियाचल रेंज में स्थित ये ऐतिहासिक 12 गुफाएं यहाँ के इतिहास और अद्भुत विरासत के प्रतीक है। ये 12 रॉक कट गुफाएं बौद्ध धर्म, अन्य पौराणिक शिलालेख का समृद्ध खजाना है। ये गुफाएं शहर लगभग 9 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यदि आप इतिहास, बौद्ध दर्शन और पौराणिक तथ्यों और कलाकृतियों के देखने की शौकीन है तो औरंगाबाद की गुफाएं आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। The caves are divided into the 3 separate groups depending on their locations. These are usually called as the western group with caves 1 to 5th, the eastern group with 6 to 9, and the northern cluster with the unfinished caves 10 to 12. The carving at the Aurangabad caves are notable for including Hinayana style stupa, Mahayana artwork, and Vijayarayana goddess. These caves are among those in India that show first millennium CE Buddhist artwork with goddess such as Durga and goddess such as Ganesha. Although Buddhist caves in other parts of India with these arts are older, numerous Buddhist deities of the Tantra tradition are also carved in this cave. औरंगाबाद की गुफाएं रॉक कट संरचना में अद्भुत नमूना है, जो नरम बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। इनकी बनावट और संरचना के आधार पर ही इनकी उत्पत्ति का समय 6वीं या 7वीं शताब्दी में बताया जाता है। इन गुफाएं की जानकारी महाराष्ट्र के एक गुफा समूह कन्हेरी से भी मिलता है। इन गुफाओं के दीवारों पर बौद्ध धर्म की कई वास्तुकलाएं चित्रित है और साथ ही बौद्ध कोशिकाएं भी निर्मित है, जिन्हें विहार कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म के देवता गणेश और माँ दुर्गा की चित्र के अलावा कई बारीक नक्काशी का प्राचीन मूर्तियों का देखने का आनंद भी आप यहाँ उठा सकते हैं। माना जाता है कि औरंगाबाद गुफाएं का प्रयोग बौद्ध भिक्षु ने अपने विहार के तंत्र मंत्र विद्याओं के सिद्धि के लिए किया करते थे। औरंगाबाद की इन गुफाओं की पहली विशेषताएं तो ये है कि ये गुफाएं नरम और आकर्षित बेसाल्ट की चट्टानों पर रॉक कट डिजाइन की अद्भुत नमूना है। इन गुफाओं की अंदरूनी दीवारों पर बौद्ध धर्म की आरंभिक चित्र व कलाकृति अंकित है। ये मौजूदा 12 गुफाएं को 3 भागों में बांटा गया है, जिस तरह पहले 1 से लेकर 5 तक पश्चिम समूह, 6 से लेकर 7 तक पूर्व समूह और 7 से लेकर 12 उत्तर समूह कहलाता है। इन गुफाओं के इनके बाहर की संकरात्मक रूप में अंकित है। सभी गुफाएं में से नंबर 3 सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें 4 बड़े स्तंभ है।
एक बड़ा हॉल के बीच में बहुत खूबसूरत मंदिर स्थित है। गुफा नंबर 7 सभी गुफाओं से सबसे विकसित और समृद्ध गुफा है। इन सभी गुफाओं में Aurangabad caves somewhat have been overshadowed by the UNESCO World Heritage Monuments of Ellora and Ajanta Caves Temple, though its sculpture are comparatively to Ajanta and Ellora. The caves are much smaller, more decrepit, and less visited. Though in the 20th century, a few scholars started looking at these cave temples as the missing link between the Ajanta and Ellora. Also, after the exact study were completed to describe as the sensitive, remarkable of life situated in the time-space span. It is protected monuments under the Archaeological Survey of India. इन सभी गुफाओं में बुद्ध की विशाल प्रतिमा अलग अलग मुद्राएं में विराजमान है। गुफाओं के दरवाजे पर रत्ताली फूलों की डिजाइनिंग भी देखी को मिलता है। इन गुफाओं की कलाकृति हीनयान शैली के स्तूप महायाना और रजयान शैली में संबंधित है। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध की गई अजंता और एलोरा गुफाएं के साथ औरंगाबाद की गुफाएं की समानता ग्रहण करने का बाद आज औरंगाबाद की इन गुफाओं को एक संरक्षण स्मारक बना दिया गया है। साथ ही इन गुफाओं का संरक्षण Cave number 1 and 3. The cave number 1 and 3 of Aurangabad and the last cave of Ajanta coexisted as it apparent from the strical parallel which we come across while examining both the side. Again at the Aurangabad, after the careful study of both cave 1 and 3, conclusion the historians have come to is that the cave 3 was earlier to the cave 1. In cave 3, the artists seem to have decorated with springly, neat and organized design of fretwork, scrolls, panels of couple, tassels, flowers, geometrical design and the highest point of the perfection of consummation. औरंगाबाद में मुख्य रूप से गुफा इस प्रकार के हैं जैसे एलोरंग की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और औरंगाबाद शहर की औरंगाबाद गुफाएं के नाम से फेमस है। As you know, the oldest name of the Aurangabad originally was Khadki, was founded by the Malik Amber or Anbar in 1610. After the fall of the Nizam Shahi dynasty in 1633, the city came under the Mughal rule and it was later renamed Aurangabad. After it became the headquarters of the Aurangabad during this viceroy's royalty over the Deccan. औरंगाबाद के सुंदर पहाड़ियों पर स्थित ये रॉक कट गुफाएं अद्भुत वास्तुकला और कलाकृति के कारण ये पर्यटकों का शीर्ष स्थान बना हुआ है। इसलिए यदि आप इतिहास और कलाकृति प्रेमी हैं तो आप गुफाओं में आपके लिए बेहद अनोखा अनुभव के लिए है। In Aurangabad, if you go over there, you will look so beautiful scenery from the distance. Stone stairs leading to the entrance, various sculpture next to the entrance. You will see the dancing god pitch, which was being famously of the mother goddess Matrikas of the Vijayarayana Buddhism, and meditating Buddha picture crafted very beautifully in this cave. If you go and see the close view, you will see that Gautam Buddha statue
is very beautifully crafted and shown how beautiful the artists at that time they were. प्रथम शताब्दी में बौद्ध विचारों के अंतर से बौद्ध को देवता का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी पूजा होने लगी। परिणामतः बौद्ध को पूजा अर्चना का केंद्र बनाया गया, जिससे महायान की उत्पत्ति हुई। पूर्व में शिक्षकविदों ने गुफाओं में 3 समूहों में बांटा था, किंतु साक्ष्यों को देखते हुए और शोधकर्ता के चलते उसे नकार दिया गया। उस सिद्धांत के अनुसार 200 ईस्वी पूर्व 2 तक समूह द्वितीय समूह यानी 6ठी शताब्दी की ओर और तृतीय समूह 7वीं शताब्दी की ओर माना जाता है। अंगल भारतीयों के द्वारा विहारों को हेतु प्रयुक्त अभिवजन गुफा मंदिर अनुपयुक्त माना गया है। अजंता का एक प्रकार का महाविद्यालय मठ था। बताया है कि दिवांग एक प्रसिद्ध बौद्ध दर्शिका तज्ञ जो तर्कशास्त्र पर कई ग्रंथों के लेख किए थे। Though it's a sculpture and the comparable to the Ajanta and the Ellora, the caves are much smaller, more described to the less visited. Though in the 20th century, the few scholars started looking of these caves temples as the missing link between the Ajanta and Ellora, and also often executive studies where comparable describe it has been sensitive marking of life situated in the time and the space span. It is protected monuments under the Archaeological Survey of India. इस गुफा में 2 द्वार मंडप है, जो कि संख्या 1 से बहुत ही अलग है, बल्कि फलकों की नक्काशी भी उसमें अलग दिखती है। इस गुफा के सहारे दिए 2 अच्छे खासे मोटे स्तंभ है, जो कि भारी नक्शों की अलंकृत है। हाँ, आकार नाप एवं भूमि योजना के अवश्य ये पहली गुफा से काफ़ी मिलती है। These caves are a lot smaller than Ellora and Ajanta, nevertheless worth to visit. Not only the great artistry, but also the beautiful landscape and the quiet atmosphere early in the morning. सामने के पर्चों के दोनों स्तंभों पे युक्त राष्ट्रोपयति पूर्व के रिक्त छोड़े स्थान पर बनी कमरे की आवश्यकता होने पर बाद में स्थान आवश्यकता का होने पर बने हैं, क्योंकि बाद में आवास के अधिक वाटिका निर्माणों में से पोर्च अंत प्रकृष्टित अंग बने गए हैं। इसे ही द्वार मंडप कहा गया है। Today, Aurangabad caves are recognized as a protected monument and maintained by the Archaeological Survey of India. Thanks to their scenic hillside sighting and the architectural richness, they also count among the top places to visit in Aurangabad. While the sculptures and the carving of Aurangabad caves are remarkable in their own right, they are often clipped by the close proximity of the UNESCO listed Ajanta and Ellora caves. Aurangabad caves attract history buff and the art confusions from across the world, with the Asian sculpture holidaymaker to often visit the site, soak the spellbinding views. Among the major things to see at the sites are cave number 1. It is a veranda around with the large Buddha sculpture and supported by the 8 pillars with figure of tree goddess and the Ganesh carved on the square base. Cave number 2, the main Buddha statue of the cave is in the
pyramid person position seated in the lion, on the lion throne, while the hand depicts Dharmachakra's mudra. Cave 3, the Buddha sculpture in the cave, future a preaching posture, seated on the double lotus, striking floral design can be seen on the door, while the arches despite Naga gardens. If cave number 4, it is a Chaitya, the cemetery or the prayer hall shaped in the square with the octagonal pillar. It is the Adran, the sculpture of the step Merlin, which can be seen at the Ajanta caves as well. Cave number 5. The Buddha image here is seen is Padmasana position with the hand of Dhyana Mudra placed on the rectangle pedestal several Saraswati miracle figure to enhance the wall. And in cave number 6, it is the veranda supported by the pillar, a porch and the cell carved on the left and the right side of the hall. Here the Buddha is placed on the lion throne in the western style, surrounded by the other figures. Cave number 7, a part of from the main Buddha sculpture. In the central Shireen, cave 7 has two chapel and the sculpture, Tara figure, Panchika, Haritya and Ganesha. And cave number 8, this is a small cave and you can across through veranda of the cave. It is two Buddha images depicted on Padmasana. Cave number 9 and 10, though the sculptures have suffered extensive damage of the sculpture of the Buddha, Padmapani, Manjushri and the Tara can be seen over here. Cave number 11 and 12, there are simple hall located at the back of and have no covering but future has a plain pillar.